Welcome, dear students. Today's topic is about the genetics. As you are aware about this important topic, so note the important points. Here the genetics. The continuity of life on the planet Earth results from its inherent characteristics of reproduction. Reproduction is the ability of living organisms to produce new individuals similar to themselves. It's known to you that it is a very important process for the existence of life on this planet, where the new individuals similar to their parents are produced. So in this way, the continuity of the life is maintained. It not only perpetuates the species by replacing the individuals killed by predators, parasites, diseases, accidents or old age with new ones, but also leads to growth of populations. It is because of this process, the reproduction, that the growth of population is observed or maintained. जैसा कि आप जानते हैं कि लोग जो है कहीं पर शिकारी शिकार को ख़त्म करता है, कहीं पर पैरासाइट्स जो है अपने होस्ट को ख़त्म करते हैं, कहीं पर डिफरेंट डिजीज़ लाइक दिस कोविड-19 कोरोना वायरस बहुत से लोगों को ख़त्म करता है, कहीं पर एक्सीडेंट्स में लोग मारे जाते हैं, कहीं पर लोग ओल्ड एज में जाकर मर जाते हैं. तो इससे जो पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीज़ होती है या डिस्ट्रक्शन होती है, इसको मेंटेन करने के लिए या इस पॉपुलेशन के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑर्गेनिज्म विच फेल टू रिप्रोड्यूस बिकम एक्सटिंक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, वो ऑर्गेनिज्म्स जो रिप्रोड्यूस होने में फेल हो जाते हैं, जो अपनी नस्ल को अफजाइश होने में या अफजाइश करने में फेल हो जाते हैं, वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं. Now the sexual reproduction has an added advantage as it introduces variations in the offsprings, as it combines the traits of two organisms. The two organisms are the parents and contributes to evolution of the species. Sexual reproduction जो है एक बड़ी एडवांटेज इसमें ये है कि ये इंट्रोड्यूस वेरिएशंस करती है, डिफरेंसेस इन द ऑफस्प्रिंग्स. जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स आते हैं तो इनमें डिफरेंस पैदा हो जाते हैं जिससे हम उनको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. अगर ऑफस्प्रिंग्स में डिफरेंसेस नहीं होते, वेरिएशंस नहीं होते, then it was very tough to identify or recognize them. As it combines the traits of two organisms, how these variations appear? It appear because of the organism, that is the two parents mean the parents. When the traits or the characteristics of the two parents, they combine, so as a result of that, the variations appear and contributes to evolution of species. इस तरह से नई नई species भी वजूद में आती है. How the traits pass from the parents to the offspring was a question of $1 million for the biologists or the breeders from the age of the origin of science or the research on this planet. Here, the big question was that how these characteristics pass, how these characters pass from the parents to the offsprings. This was a very tough task. एक बर्निंग इश्यू, एक हॉटस्पॉट ये था कि ये आखिरकार बच्चे पेरेंट जैसे क्यों होते हैं, या ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट से डिफरेंट कैरेक्टर्स में कैसे होते हैं. तो इट वाज अ टफ वर्क फॉर द बायोलॉजिस्ट और वी कैन से द ब्रीडर्स फ्रॉम द एज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द साइंस. जब से तहकीक शुरू हुई है, जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, तब से इस अर्थ पर ये सबसे बड़ा टफ काम था, सबसे टफ क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन था. Countless scientists worked on this aspect. That means how the transmission of characteristics place and produce their findings before various authorities time, but failed to satisfy them.
वक्त के साथ साथ बहुत से साइंटिस्टों ने इस पर काम किया है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स पर, लेकिन वो नाकाम हुई। उन्होंने जब भी कहीं पर अपनी प्रोसीडिंग्स पेश किया है किसी भी अथॉरिटी के पास, किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, बट दे फेल टू सेटिस्फाई देम। कहीं न कहीं कोई न कोई डिमेरिट था, कहीं न कोई लिमिटेशन थी, जिससे ये क्वेश्चन जो है दैट हाउ द कैरेक्टर्स ट्रांसफर और द ट्रेट्स ट्रांसफर, तो ये कहीं न कहीं ये क्वेश्चन था कि ये कैसे मुमकिन होता है। Now the hot spots were, the big questions were that the transmission of characters means the heredity. ये heredity कैसे होती है? How the transmission of characters takes place. Second was the differences or the similarities among related organisms. The variations, how the variations are caused. The very important thing was the mechanism, that how these activities takes place or process. That mechanism is known as the genetics. Now, with the passage of time, we became familiar with the several terms, such as, वक्त के साथ साथ हमने बहुत सी terms हमारी समझ में आ गई। क्या है? The transmission of characters from parent to offspring is referred as heredity. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जो हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, इस चीज को हम हेरिडिटी बोलते हैं। Although likes produce likes, but offsprings of a parent show differences with each other and form their parents. These differences are referred as variations. Next thing was, अगरचा लाइक्स प्रोड्यूस लाइक्स, बिल्कुल ये एक बड़ा मुहावरा था कि जो जैसा है उससे वैसा ही आता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जो ये ऑफस्प्रिंग्स थे उन्होंने डिफरेंस दिखाई है अपने पेरेंट से, और ये डिफरेंस जो है इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स and the causes of variations in living organisms related by descent is known as genetics. This word is originated from the Greek language. Genesis means the descent, that is the origin. Now, what scientific study where we understood the mechanism of inheritance? कौन सा mechanism? Inheritance का, that means how the transmission of characters takes place and how the variations are caused. This mechanism is referred as the study of this mechanism is referred as the genetics. So the genetics is the study of heredity and variations. In short, we can say that the genetics is the study of heredity and the variations. Now the heredity, it's a Latin, derived from the Latin word heredatus, means a heirship, warasat. The science that deals with the transmission of characters from parents to offsprings of living organisms is called heredity. It deals with the phenomena of like begets like. Example, human babies are like human babies in all our characteristics. Now, about 200 characters are found to be hereditary in man. Variations deals with the differences. Variation जो है ये differences के साथ deal करते हैं. Maybe these differences are morphological, वो body structure में है, morphological differences है, physiological, भाई जो अंदर से physiological process है, there is we can say the variations, cytological, cell base पर जो है cell के अंदर जो है वो differences नज़र आती है, and behavioristic, behavior के अंदर differences नज़र आती है among the individuals of the same species. एक ही species, the species simply the group of similar organisms. Organisms का एक ऐसा ग्रुप जो बिल्कुल एक जैसा हो, जो अपनी ही species के अंदर क्या है कि ब्रीड करते हैं,
फिर क्या है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, उनको स्पीशीज़ हम कहते हैं। तो एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चेंज जो चाहे मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन हो, डिफरेंस हो, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एंड बिहेवियरिस्टिक, एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर द सेम पेरेंट्स, यहाँ एक ही पेरेंट्स के जो डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स है उनके अंदर जो ये वेरिएशन डिफरेंसेस नज़र आते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। Types of the classification of variations. Variations are classified according to the following. These are different types of the variation. Variations may be classified like that on the basis of the affected trait, morphological, physiological, cytological and behavioristic. क्या ये करेक्टर जो है जो डिफरेंस दिखाता है, क्या ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस दिखाता है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस दिखाता है, साइटोलॉजिकल या बिहेवियरिक टाइप का डिफरेंस दिखाता है. Parts, the meristic, number of parts and their geometrical relations, and substantive, सेपरेट या इंडिपेंडेंट. करे पार्ट जो है किसी पार्ट के अंदर या नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर डिफरेंस जो हमें नज़र आती है, तो क्या ये सेपरेट है या इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हो, तो इस टाइप की जो डिफरेंस हैं उनमें हम नज़र आते हैं. इम्पैक्ट, यूजफुल, ये डिफरेंस वेरिएशन जो है क्या ये फ़ायदेमंद है, हार्मफुल है या न्यूट्रल है, और इनडिफरेंट, गुड और बैड है. नाउ द डिग्री, क्या ये वेरिएशन जो है इट इज़ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, क्या ये कंटिन्यूस ही चल रही है या कहीं न कहीं ये डिलिंक हो जाती है यानी डिसकंटिन्यू हो जाती है. नंबर 5, सेल्स इफेक्टेड, क्या ये वेरिएशन किसी सोमेटिक सेल के अंदर है या जर्मलाइन. सोमेटिक सेल्स आर द जनरल सेल्स. हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो जनरल सेल्स होती है जिनके अंदर माइटोटिक डिवीजन ही होता है, उसको हम सोमेटिक सेल बोलते हैं. व्हेयरएज द जर्मलाइन सेल्स आर कंसर्न्ड विद द वी कैन से द रिप्रोडक्टिव सेल्स. सेक्स सेल्स जिनको हम बोलते हैं, जिनके अंदर मियासिस हो जाती है, हैप्लॉइड टाइप की सेल्स बन जाती है, ये डिप्लॉइड सेल्स होती है. तो क्या ये वेरिएशन सोमेटिक सेल में होती है या ये जर्मलाइन सेल के अंदर नजर आती है. फिनोटाइपिक मीन ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिनोटाइप. एक ऑर्गेनिज्म जो बाहर से हमें फिजिकली जो हमें नज़र आता है, जैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग दूर से हमें दिखाए कि कहीं ना कहीं डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंस है, वेरिएशन है, क्या ये इस टाइप की है. और जीनोटाइपिक, ये जीनोटाइपिक भी हो सकती है. दैट मीन्स द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऑर्गेनिज्म का, एक पेरेंट का, क्या ऑफस्प्रिंग और पेरेंट जो है उसमें वेरिएशन नज़र आती है. अगर वेरिएशन नज़र आती है, वी कॉल्ड दैट इट इज़ द जीनोटाइपिक वेरिएशन. Now, this was all about the heredity, the genetics term, and some types of the variations. Now, in the coming lecture, we will discuss about the general types of the variations, then their importance. Have a nice morning. Thanks.